एक सेकंड में डायरेक्ट उस पर डालूं ताकि सेव हो जाए। चलिए एटीपी ठीक है 0620 Feb March 2021। जस्ट अ सेकंड ठीक है। अच्छा सो एक सेकंड। अच्छा दिस पेपर ठीक है एटीपी पेपर February March 2021। इसके द फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है there's a वो कह रहा है silver chloride is an ionic compound and is insoluble in water. Molten silver chloride breaks down during electrolysis. The product of chlorine and silver. Chlorine gas is soluble in water and toxic. A student suggests using the apparatus shown to break down silver chloride. ठीक है तो I don't think इसमें the apparatus kind of looks fine ठीक है। वैसे हम डिटेल देख लेते हैं कि होता क्या है कि which side अच्छा कैथोड और एनोड का तो नहीं पता इसमें लेकिन let's say one of them is going to be the negative cathode, the other one is going to be the positive anode. Silver ions जो होंगे ना they'll get attracted to the negative cathode and Cl ions will get attracted to the positive anode. बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स भेज रही होती है on the negative side and on the positive side it's taking away electrons. तो silver ions are the ones that are going to gain electrons क्योंकि remember molten के अंदर आपके पास और कुछ नहीं होता ठीक है you just have silver ions so they're the ones that are going to gain electrons and they'll become silver. तो यहाँ पे what you'll find is you'll find silver metal on this electrode. और दूसरी साइड पे क्या होगा दूसरी साइड पे it's going to be Cl ions. Cl ions are going to lose electrons. Battery is going to take away electrons from it. तो वो diatomic होता है so it should be double. Cl-1 would lose electrons and it will form Cl2. तो Cl2 gas जो है ना वो यहाँ पे बनेगी. Cl2 is a gas और उससे क्या है कि वो soluble भी है तो वो थोड़ी बहुत मिक्स भी हो जाएगी पानी के अंदर तो उससे क्या produces a toxic it's soluble in water and toxic तो काफी toxic है. अच्छा इस पाइप का नहीं पता कि क्या पर्पस है. Draw an arrow on the diagram to show where heat must be applied so that the silver chloride can break down. तो molten का electrolysis होगा तो heat I think you're obviously going to heat it here so that it melts. Electrolysis molten का होना जरूरी क्यों है क्योंकि molten के अंदर the ions are able to move freely. So if they are not able to move freely, you can't have electrolysis. Complete the diagram to show how chlorine gas can be collected in the volume of the chlorine measured. Label any apparatus you have drawn. तो उससे कहा है it's soluble in water and toxic. So एक ही ऑप्शन रह जाता है and that is किस तरह कलेक्ट करोगे क्लोरीन गैस यहाँ से let's say गैस बन रही है क्लोरीन गैस or gas is coming out. What apparatus would you use to collect chlorine gas? Gas range. ठीक है so it's going to be a gas range. तो बस वो एक rough make a rough gas syringe ठीक है it's going to have all these markings on it so you go and label it ठीक है a rough diagram और इसको ना मतलब सील कर देना ताकि इसके मार्क्स कट जाते हैं because gases it should be properly sealed तो बीच में ना ड्राइंग कर देना make sure you have no gaps left ठीक है so you've got this gas syringe. और कौन से तरीके होते हैं वैसे गैस कलेक्शन के अगर मैं इसको ना लेट मी शो यू थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर में हाँ चलो मैं एक सेकंड दिखाता हूँ एक डिटेल नोट्स हैं वैसे A2 के बट दीज आर यहाँ पे नजर आ रहे हैं पेपर एनालिटिकल जस्ट अ सेकंड इधर मैं दिखा देता हूँ there's a board 1 second.
अच्छा A2 के है, लेकिन it's all related to apparatus, so they're pretty helpful. ठीक है, तो क्योंकि उधर भी ना ATP होता है एक ना. So I'll show you gas collection. ठीक है, gas collection happens. क्या है gas collection वाला apparatus? Just a second. So gas collection, collecting gases. ठीक है, so first thing, collecting gases, the best one is measuring syringe. ठीक है, you can just collect it and you can measure it. ठीक है, gases collection में ना, make sure you remember that के temperature change नहीं करना, because gases can expand and they can also contract. So you have to keep the temperature constant. फिर एक ओवर वाटर होता है. You can't use over water. You can bubble it through an inverted measuring cylinder and you can collect it, right? But that can't be used in this case, क्योंकि उसने कहा है कि वो toxic है. It is soluble in water, तो वो तो पानी के अंदर mix हो जाएगी. So you can't use this method. ठीक है, और क्या तरीके होते हैं gas collection के? There's a Upward delivery or downward delivery? ठीक है, so there's upward and downward delivery, but the problem with this method is कि you can obviously collect the gas, but you can't measure it, क्योंकि you can't see the gas, right? So you can't really tell कि where, मतलब top तक कहाँ तक fill हुए हैं the particles. You can't really judge कि where the particles are. In a gas syringe, you can do that, right? क्योंकि वो syringe move करती रहती है ना, so you can say कि this is how much gas has been filled. And the same over here, the space, you can measure the space, right? So is that clear? Upward and downward delivery are not good for measurements, right? Is that clear? Yes. अच्छा, चलो फिर वापस इस पे आ जाते हैं. So I guess gas syringe is good. So complete the diagram. So give two observations that are made at the silver chloride breakdown. So what are the two observations? Silver यहाँ पे form हो रहा है. What would you see? मतलब silver बन रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा? Cathode mass increases. ठीक है, so ठीक है, that's one. लेकिन observation would be silverish metal deposited at cathode, right? So silver shiny metal. अच्छा, shiny metal deposited at cathode, right? या उससे बताया हुआ तो नहीं है कि कौन सा कैथोड डिपॉजिटेड एट, लिख देते हैं कैथोड. What is the other observation? Green gas emerged at anode. ठीक है, greenish yellow gas. So greenish yellow gas at anode. Then the person doing the experiment followed all normal laboratory safety rules. State one additional safety precaution that should be taken during the experiment. Give a reason for your answer. तो सेकंड भाई नॉर्मल सेफ्टी, तो क्या सेफ्टी चाहिए इसमें? Wearing mask. मास्क से क्या होगा? अच्छा, पहले बताओ डेंजर क्या है? व्हाट इज द टू डेंजर्स ऑफ दिस दैट यू सी? Chlorine escape हो जाए. हाँ, क्योंकि उसने कहा था, he told us that it's toxic, right? What is the other danger? The power silver. Huh? The heating. The Heating, right? And let me bunch just of so there, just one second. इसका MSP खोला, just one second. किधर गया इसका marking scheme? अच्छा, there are two dangers. So toxic chlorine. How would you prevent the toxic chlorine? gloves. नहीं, gloves से तो toxic chlorine को कुछ नहीं होगा. Just a second. Toxic chlorine है ना, so I mean you can inhale it, breathe in. So what would you do? वो हमारा किधर गया? ये वाला safety precautions, ठीक है? Not this one. There's a thing called कहाँ पे गया? Sir, fume cupboard. हाँ, fume cupboard, ठीक है. वो यहाँ पे लिखा होगा बस. Fume cupboard is के you do it in a fume cupboard. Fume cupboard looks like this. It's actually it's literally a cupboard made of glass. And वो अक्सर देखा होगा कि वो gloves के साथ ना you
enter that glass. Only your hands can actually enter that glass, and that's known as a fume cupboard. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं वही चेक करूँ मार्केट स्कीम में. एंड हीटिंग से भी हो सकता है. सो फॉर हीटिंग यू यूज tongs and so you are careful about handling the hot apparatus. ठीक है, so tongs etc. but यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Fume cupboard, that's it. Fume cupboard लिखा हुआ है. Chlorine is toxic, that's it. So I think वो जो tongs वाला है ना, that's he said कि he used normal laboratory methods. So I guess heating was not that dangerous in this case. Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. As the next one, the person who followed that said, suggest one reason why zinc is not a suitable material to use as the electrodes. Why is zinc not suitable in electrolysis as an electrode? Is Not zinc inert. It's not inert. Yeah, अब लिख लो कि zinc is reactive. So what will happen to it? It will dissolve. It will lose electrons. Zinc will lose electrons. कहाँ पे electron lose होता है? At anode. Anode पे हमेशा oxidation होती है. Battery is taking away electrons. So zinc will start losing electrons and it will dissolve. So I guess इसका सिर्फ एक ही mark था, तो I just it's very reactive. That's it. I said the chlorine gas was bubbled into an aqueous solution of sodium salt. The color of the solution changed from colorless to orange. Identify the sodium salt. ये orange क्या चीज होती है? वो किस चीज का color orange होता है? Methyl orange. नहीं, वो कह रहा है Cl2 was sodium salt, NaX. तो उसमें है कि there's a thing called periodic table में होता है कि there's a thing called more reactive displaces a less reactive, right? तो chlorine आएगा and it will displace this X. वो बन जाएगा NaCl. और जो X होगा ना, that's going to get displaced. ठीक है, that's the reaction that's happening. ठीक है, so orange जो होता है ना, ये halogens का होता है कि reactivity decreases down the group. ठीक है, Cl is more reactive, then you have Br and then you have I, so reactivity decreases. So more reactive displaces a less reactive. So orange remember is bromine. ठीक है, ये जो displace हुआ है ना, that must be bromine. ये metals में भी होता है. More reactive displaces a less reactive. ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे Mg डालता ना, तो Mg Na को displace, not Mg is less reactive. अगर कोई और होता, potassium होता, potassium would have displaced Na. ठीक है, more reactive metal displaces a less reactive metal. Same with non-metals. A more reactive non-metal halogen will displace a less reactive halogen. Is that clear? Yes. So the explanation for this is पहले the sodium salt, bromine is formed क्योंकि, और उसमें बस बताना है कि जो red orange है ना, that is bromine. So mark scheme में ये दिया होगा कि sodium bromide, that's one mark, and bromine is displaced by chlorine. बस ये लिखा हुआ है. ठीक है, वो उसकी रीजनिंग लिखी हुई है. तो the orange thing is bromine. Chlorine greenish yellow होता है. ठीक है, remember that. ये वो जो acid basis salts वाला नहीं है, वो उसके अंदर सारा लिखा हुआ है. As a next question, this one is about making a graph again. So this one is about titration. So what he's doing is there's a reaction between potassium hydroxide and two different aqueous solutions of hydrochloric acid labeled A and B. So reaction है potassium hydroxide with HCl, and there are two different HCls, A and B. So a burette was filled with solution A. तो ये जो A HCl है ना, वो यहाँ पे है. So some solutions was some of A was run out of the burette so that the level of the solution A was on the burette scale. Okay, the measuring cylinder was used to measure 25 cm of potassium hydroxide. So bottom पे ना potassium hydroxide है. How much is it? 25. अच्छा, that's 25 centimeter cube. और ऊपर से ना top से he's adding HCl. अच्छा, and top से he's adding specifically A. ठीक है, A को वो add कर रहा है.
अच्छा, अब ये कि ऊपर से वो HCl ऐड करे. Now what's going to happen is कि solution A was slowly added from the beaker to the corner flask while the flask was swirled until the solution just changed color. So there's a titration happening. Readings बताओ, what's this reading? Initial burette reading HCl की. 8 centimeter cube. 8. ठीक है, 8 है. कितने decimal places तक लिखते हैं इसको? मतलब 8 है, लेकिन is it, should I write just 8 or should I write 8.0. 8.0? क्योंकि वो जो स्केल है ना, वो 1 decimal place तक चल रहा है. ठीक है, रिमेंबर वो डेसिमल्स आपने खुद सेलेक्ट करने हैं. Look at the scale. This is 7.1, 7.2, 7.3, 7.5. So 1 decimal place चल रहा है. So this is not just 8, it's 8.0. What is this value? 17.9. 17.9 centimeter cube. 17.9 centimeter cube. Centimeter cube लिखने की जरूरत नहीं है. अगर वो लेबल के अंदर centimeter cube दिया हुआ ना, so you don't need to write it over here. अगर I यहाँ think पे हमने उल्टा लिख दिया है. हाँ नहीं, हाँ ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है. इनिशियल नीचे वाला था, ठीक है, वो 8.0 था, this was 17.9. अच्छा, next, calculate the difference. How much solution was used? 9.9. Difference 9.9 आ रहा है, right? Yes. तो मतलब इनिशियली अगर ब्यूट यहाँ तक भरा हुआ था, फिर उसको पोर किया तो नीचे आ गया. ठीक है, so the difference is the amount of acid that is added. Anyways, you've got an experiment number 2, same thing. Now he's, I think, repeating everything with solution B. सब कुछ solution B के साथ repeat कर रहा है. तो solution B, same experiment but different HCl. क्या value है? 7 7.5, I think. and what's this one? 27 point क्या है? 27.5. 3. Yes. So what's the volume used? Nineteen point 19.8. ठीक है, so that's it's okay. It's 19.8, right? Yes. As state the color change observed when the color flash at the end point in experiment 2. अच्छा, end point. इसमें उसने, did he use an indicator somewhere? हाँ. Methyl orange. So he used methyl orange. ठीक है, that's given over here. तो उसने ना यहाँ पे methyl orange डाला है. Now that's just an indicator. So do you know what the color change of methyl orange is? वो उसमें मैं I'll open the acid basis salts data sheet. कहाँ पे की है? ठीक है, इसके अंदर सारे कलर चेंजेस, एवरीथिंग इज रिटन. ठीक है, तो वैसे किसी को याद है मिथाइल ऑरेंज, व्हाट्स द कलर चेंज? दिस वन, इट्स red. इन एसिड एंड ऑरेंज येलो इन एल्कीन. ठीक है, तो अभी स्टार्ट के अंदर यहाँ पे व्हाट्स प्रेजेंट? यू हैव एन एल्की स्टार्ट के अंदर. जब ऊपर से HCl नहीं डाला तो यू गॉट एन एल्की. एल्की के अंदर वो क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी ऑरेंज येलो स्टार्ट में, बिफोर एनीथिंग हैपेंस, राइट? इज दैट क्लियर? Yes. और फिर क्या होगा? ऊपर से जब वो HCl डलना शुरू होगा तो the KOH will Red. react. फिर जब HCl ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो रेड हो जाएगा. ठीक है, so it's going to go to red. So the color changes is going to go from orange yellow and it's going to then become red in color. ठीक है, तो that's going to be the color change. बीच में न्यूट्रलाइज होगा, KOH खत्म हो जाएगा, तब टाइट्रेशन रोक देनी चाहिए. ठीक है, इफ यू डोंट स्टॉप तो वो जो एक्स्ट्रा ड्रॉप डालेंगे ना, इट्स गोइंग टू टर्न रेड. दैट विल इंडिकेट कि भी अब आप HCl ज्यादा डाल रहे हो, अब आपको रुक जाना चाहिए. ठीक है, now before starting the titration in experiment number 2, the conical flask was rinsed with water. Explain why the conical flask was rinsed with water. To remove impurities. हाँ, बस यही होगा. to remove impurities. वो चेक कर लेते हैं जी, being specific or not. Any residue from experiment number 1, क्योंकि वो उसी फ्लास्क के अंदर कर रहा है experiment number 1. So to remove any impurities from experiment number 1, I said the conical flask was not then rinsed with aqueous potassium hydroxide. State how rinsing the flask with potassium hydroxide would change the volume of solution B needed. Explain your answer. अच्छा,
तो वो ये कह रहा है कि अब गौर से सुनना, वो कह रहा है कि इसको ना रिंस किया था वाटर के साथ, और वो कह रहा है कि इट वाज नॉट रिंस्ड विद KOH। अब मुझे तो अगर वो KOH के साथ उसको रिंस करता, हाउ वुड दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ HCl दैट वुड बी एडेड फ्रॉम द टॉप? अगर मैं इस फ्लास्क को KOH से रिंस करता, ठीक है, व्हाट वुड हैव हैपेंड? थोड़ा सा KOH पीछे लगा रहता ना, थोड़े से ड्रॉप्स। मैंने वो उसमें मेजर कितना किया था? 25 cm³ KOH मेजर किया था ना। अगर इफ आई हैड इवन वॉश द फ्लास्क विद KOH, जैसा कभी आप पानी से धोते हो ना चीज, तो पानी उसके ऊपर लगा रहता है ना, तो इफ आई हैड वॉश्ड इट विद KOH, then the flask would already have some KOH in it. थोड़ा बहुत होता, लेकिन there would have still been some KOH left on the sides of the flask. तो उसके बाद जब मैं उसके अंदर 25 cm³ मेजर करता, तो मेरा जो KOH होता वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, क्योंकि there was already some KOH left in the flask. You get the idea? Yes. मतलब ये बात समझ आइए। और उसकी वजह से क्या होगा? the HCl that is going to be added, उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके नीचे फ्लास्क में KOH ज्यादा है। सो द पॉइंट इज के वाटर के साथ ही रिंस करना चाहिए था, क्योंकि वाटर लगा रहता है, वाटर तो रिएक्शन में इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, सो वाटर वुड नॉट हैव डन एनीथिंग, राइट? लेकिन अगर आप KOH से इसको वॉश करते ना फ्लास्क को, तो आपका फ्लास्क में पहले से KOH होता थोड़ा सा, जो उसके अंदर पड़ा होता, बीच में बचा हुआ पड़ा होता, एंड ऊपर से फिर आप 25 cm³ डालते, तो आपका KOH की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ HCl यूज वुड हैव बीन स्लाइटली मोर। इज दैट क्लियर? Is this idea clear? ये clear है? Yes. तो उसने क्या लिखा हुआ है? Larger volume would be needed, it would increase as more potassium hydroxide, there would be some leftover potassium hydroxide already in the flask, ठीक है? अच्छा, then you have another thing, which is before starting the ये हो गया ना, ये part हो गया. Did you switch aqueous solution of hydrochloric acid A or B was more concentrated? Explain your answer. अच्छा, now this one. किसमें वॉल्यूम ज्यादा यूज हुआ है HCl का? Because remember, you're using the same amount of KOH, right? This is HClB. इसके अंदर कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? 19.8. 19.8 cm³, right? अच्छा, और इधर कितना यूज हुआ है HClA? That was 9.9 cm³, right? KOH तो वही है, it's the same KOH. You had the same KOH which was reacting with HClA, and you had exactly the same KOH that was also reacting with HClB. तो KOH तो सेम है, तो मुझे तो कि HCl अगर ज्यादा यूज हुआ है, तो ये वाला जो HCl था, इज इट डाइल्यूट और इज इट कॉन्सेंट्रेटेड? Concentrated. नहीं, अगर ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा यूज होता है या डाइल्यूट ज्यादा यूज होता है? कि लेट्स से मेरे पास दो HCl है, राइट? दोनों में सेम रिएक्शन है. I've got an HCl, I've got another HCl. मुझे चाहिए 10 पार्टिकल्स, राइट? अब वो 10 पार्टिकल्स जो है ना, लेट्स से रिएक्शन में आई नीड 10 पार्टिकल्स, ठीक है? वो 10 पार्टिकल्स जो हैं, those 10 particles could be present in a very 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? और वो 10 पार्टिकल्स एक ज्यादा वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. इनमें से कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? कौन सा HCl? Which of the two HCls is, क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, which one of the two HCls is concentrated, which one is dilute? Left is concentrated. ठीक है, अरे एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड.
अच्छा सॉरी, तो सॉरी, आवाज आ रही है ना? Yes. अच्छा, this is concentrated and this is dilute, ठीक है? So the idea is कि KOH तो सेम था ना, KOH was exactly the same. तो let's say KOH को 10 particles चाहिए थे HCl के, ठीक है? So you got 10 particles from this, you got 10 particles from this, right? डाइल्यूट होगा ना, डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा होगा, उसका मतलब है उसकी अमाउंट, उसका जो वॉल्यूम होगा ना वो ज्यादा यूज होगा. कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना तो कम वॉल्यूम चाहिए होगा. मतलब इज दिस आइडिया क्लियर? Yes, sir. Yes. तो अगर एक केस में 19.8 सीएम क्यूब यूज हो रहा है और दूसरे केस में 9.9 सीएम क्यूब इज बीइंग यूज्ड, राइट? तो द आइडिया इज कि क्वांटिटी तो सेम चाहिए थी, क्योंकि KOH तो वही था एग्जैक्टली दोनों केसेस में. द KOH वाज एग्जैक्टली द सेम, सो यू नीडेड एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटी इन बोथ केसेस. तो इसका मतलब है 19.8 चाहिए, तो इसका मतलब ये डाइल्यूट होगा, क्योंकि इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि पानी ज्यादा होगा, पार्टिकल्स कम होंगे, तो इसलिए आपको इट नीडेड अ लार्जर वॉल्यूम. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, वन ऑफ द HCl इज डाइल्यूट, द अदर वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. और दोनों में कॉन्सेंट्रेशन में फर्क क्या है? डबल है, क्योंकि 9.9 को डबल करो तो 19.8 बनता है ना. तो this is twice as concentrated. But is this idea clear? Yes, sir. Yes. वो जो 10 particles वाला ना, वो मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है. मतलब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि 10 particles. I just wanted to show you कि दोनों केसेस में you needed the same amount of HCl, but one of them must have been very dilute, which is why a larger volume is being used. ठीक है? तो सारा वो क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है इस पे? क्लियर Yes, सारा? sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, सो अच्छा, before ये वाला part तो हो गया था, so explain which one is more concentrated. So A is more concentrated, smaller volume is used. ठीक है. और did you use how many times more concentrated? Twice as concentrated. क्योंकि remember concentration is moles over volume, inversely proportional to volume होती है concentration. कि वॉल्यूम कम करते जाओ, पार्टिकल्स वही रखो, तो इट्स गोइंग टू बी twice as concentrated. ठीक है? So it's exactly two times more concentrated. अच्छा, explain why experiment 1 and experiment 2 should be repeated. Why do you repeat experiments? For more accuracy. To ensure accuracy. Okay, sure. To अच्छा ठीक है मास. Nicola. मास ही उस पर YouTube पे पढ़ो, मैं वैसे शेयर कर दूंगा लिंक. अच्छा, Okay. सो अच्छा, इस पे ना I'll give you a concept about the two things. There's a thing called reliability and there's a thing called accuracy. अच्छा, there's a thing called accuracy. तो अब इस पे मैं वैसे चेक कर लेता हूँ कि उसने एग्जैक्टली क्या दिया है, लेकिन I'll explain the two things. ठीक है? सो नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ था कि, अच्छा ये मैं बताता हूँ. ठीक है, इसका मैं बताता हूँ और इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. अच्छा, व्हाट इज रिलायबल एंड व्हाट इज एक्यूरेट? ठीक है, एक्यूरेट मींस हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू. ठीक है, that is what is meant by accurate. Now the problem with accuracy is maybe your apparatus is faulty. अगर faulty apparatus होगा ना, तो जितनी मर्जी दफा करो, it's always going to be an inaccurate value. Is that idea clear? So accuracy or how close you are to the true value, that depends a lot on the system. I mean, if there's an error in the system, अगर आपकी device ही खराब है, you are never going to be accurate. ठीक है? Is that clear? Is this thing clear? Yes, sir. तो इसको कहते हैं कि मतलब it's more dependent on the system कि how accurate you can be. That is kind of more dependent on the system. अगर आपका apparatus बहुत accurate है, बहुत, तो आपका result भी accurate होगा. ठीक है? अच्छा, but what is reliable? Reliable is, let's say
जो भी वैल्यू है, योर सिस्टम इज एक्यूरेट लेट्स से, तो उसमें ना देयर आर रैंडम एरर्स. मतलब इवन अगर सब कुछ भी सही हो ना, there's going to be a lot of random errors. Random errors is के आप ना वो टाइट्रेशन का टैप ऑफ करना भूल गए. That's a random error. ठीक है, उसका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं. That's a human error. ठीक है, मे बी द टेबल शेक्स, और वो जो ब्यूरेट शेक हो गया, या फिर वो आपने रीडिंग लेते हुए ना अपना जो आई लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, मे बी सम एरर. ठीक है, सम रैंडम, रैंडम का मतलब रैंडम है. ठीक है, एनी एरर. तो लेट्स से योर वैल्यू वाज कमिंग आउट टू बी, क्या था, 9.9 cm क्यूब. Let's say 9.9 cm cube was the true value. कि अगर सब कुछ सही होता, that was the true value. In reality, you're probably never going to get 9.9 cm cube. You sometimes अगर आप एक experiment करोगे ना, तो you might get 9.10. ठीक है. You might repeat the experiment, then you would get 9.80. कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कभी थोड़ा सा कम हो जाएगा. कभी आप फिर repeat करोगे तो you might get 9.85, right? तो you're going to keep on repeating experiments. Now, repeating experiments does two things. It eliminates random errors. ठीक है, let's say एक और दफा repeat किया तो, अच्छा नहीं 9.10 नहीं, ये एक सेकंड 9.9 है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, बल्कि 9.10 को भी रहने देते हैं. एक दफा मेरे पास 10 आ गया, ठीक है, I got 9.75 let's say. ठीक है, so let's say I repeated the experiment several times and I got these values, right? So there's random ups and downs, ठीक है, for some random reason. Now इससे मुझे स्पॉट पहले करो कि वो कौन सा रिजल्ट है जो आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ही गलत है, कि जिसके अंदर ना कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, which is why maybe you did some very terrible mistake in the experiment while doing it. इन सारी वैल्यूज में बताओ कि कौन सी वैल्यू है which is completely not following the trend. Sir, 10.0. नहीं, 10.0 है. देखो सारी वैल्यूज, मैंने कहा था 9.9 ट्रू वैल्यू है ना, और मैंने कहा एक्सपेरिमेंट जब करोगे ना तो यू नॉट गोइंग टू गेट 9.9 ऑलवेज. ठीक है, यू माइट गेट slightly higher than 9.9. तो सारी वैल्यूज 9.9 के करीब है. 9.85 very close to 9.9, 9.80 very close to 9.9, 10 that's also very close to 9.9, 9.75 हाँ ठीक है. लेकिन जो 9.10 है ना, ये तो कोई बहुत दूर चली गई है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर क्यूब दूर चली गई है. तो is that clear कि that's known as an anomalous value? Is this idea clear? Yes, sir. ठीक है, सारों को क्लियर है कि that's an anomalous value. तो रिपीट जब करते हो ना, तो आपको पता लगता है कौन से रिजल्ट्स रिलायबल है, कौन से अनरिलायबल है. क्योंकि जब आप रिलायबल रिजल्ट्स आर द वंस दैट आर रिपीटेबल. यानी आप अगर वेइंग मशीन के ऊपर ना अपना वेट करते हो, मैं करता हूँ, ठीक है, लेट्स से एक दफा 91 kg आता है, एक दफा 92 kg आता है, एक दफा 90.5 kg आता है, और चौथी दफा मैं करता हूँ एकदम से आता है 78 kg. तो मुझे पता है कि सारों में ना 78 kg में कोई मसला था, मैंने मशीन स्टक हो गई थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम था. तो आई नो that's a very unreliable result. So that's, you can spot when you repeat experiments, so your accuracy के करीब नहीं जा रहे. Accuracy, remember, accuracy जो है ना वो सिस्टम स्पेसिफिक है. Accuracy आप तभी accurate हो गया अगर आपकी डिवाइसेस बहुत accurate होंगे. तो accuracy जो है ना वो इससे रिपीट करने से आप accurate नहीं हो सकते. पर अगर मैं वेट करने जा रहा हूँ ना अपना, तो मुझे जो वेइंग बैलेंस है ना वो बहुत accurate चाहिए. वही मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा. इससे एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होने वाली. इससे सिर्फ रिलायबिलिटी का पता लगेगा. यू विल बी एबल टू स्पॉट व्हिच रिजल्ट्स आर कंप्लीटली देयर समथिंग रॉन्ग विद देम. इज दिस क्लियर? ये आइडिया क्लियर है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी का? Yes, sir. और फिर एक और वो है कि रिलायबिलिटी से फायदा ये है कि जब व्हेन यू टेक द एवरेज, तो यू गेट वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, जो कि बेस्ड ऑन दैट एपरेटस वाज द करेक्ट वैल्यू. पर इंसानों की अगर उठा के एवरेज लोगे तो मे बी यू माइट गेट वेरी क्लोज टू 9.9. ठीक है, तो मीन वैल्यू लेके यू कैन, under that specific conditions, you can be very accurate or very close to the value you should have gotten using that apparatus. ठीक है, so remember this कि simple इसमें याद रखना है कि you repeat experiments. Why? Because you get reliable results and you are able to spot anomalous values. ठीक है, the ones that should not be
considered. बाकी ये reduce the volume of solution be required if experiment 2 is carried out with 50 cm of aqueous potassium hydroxide. तो वो कह रहा है कि इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ना अगर 50 cm³ कर लो KOH तो ऊपर से HCl क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट? Is that clear? Yes, sir. अच्छा, तो HCl जो है that's going to double, ठीक है? तो बस उसका आंसर ये है, और फिर ये कि reduce the volume of solution be required if experiment 2 is carried out with 50 cm³ वो हो गया. Describe one change that could be made to apparatus to improve the accuracy of the results. तो अभी वो accuracy का क्वेश्चन आ गया. Accuracy जो है ना वो तब improve होती है जब आप apparatus improve करते हो, सिस्टम को improve करते हो, तो you become more accurate. तो यहाँ पे burette जो है ना, burette से ज्यादा accurate कोई चीज नहीं है. So you can't change the burette. There's nothing more accurate in the chemistry lab other than the burette. इसमें एक चीज है which is kind of very inaccurate. वो ये है, पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, that's a measuring cylinder. यहाँ पे जब वो 25 cm³ potassium hydroxide measure कर रहा था ना, he used a measuring cylinder. Remember, measuring cylinder is kind of very inaccurate. So what is the other very accurate device for measuring potassium hydroxide? क्या होगा? मैं measurements का दिखा दूं कि measurements में ना एक तो ये measuring cylinder था, ठीक है? It's fast, but it's not very accurate. ठीक है, remember that. Pipette है, ठीक है? Pipette is it's a very accurate device, but it's slow. तो अगर आपने fast काम करना है उसके लिए नहीं है, लेकिन it's very accurate. So it measures. It only has one mark, and it's like a dropper. ठीक है? वो पीछे pipette filler होता है that creates a suction. The liquid gets sucked up, and एक particular mark होता है, you can fill it up. So it's very accurate device. So instead of a measuring cylinder, you should use a pipette. ठीक है? ये clear है? Yes, sir. Or describe what effect using a larger conical flask would have on the results obtained. तो वो कह रहे नीचे जो conical flask है ना, कहाँ पे वो डायग्राम था, ये वाला, इसको अगर बड़ा कर लो तो रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट होगा? मेरा नहीं ख्याल कोई इफेक्ट होगा वैसे. मतलब ये बड़ा होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ना चाहिए. आई डोंट थिंक, इसका तो कोई काम ही नहीं है. इसका तो बस एक कंटेनर था एट द बॉटम, ठीक है? सो इट हैड नथिंग टू डू विद द एक्सपेरिमेंट, इट वाज जस्ट अ कंटेनर. सो हाँ ठीक है, वो नन लिखा हुआ है, ठीक है? नो इफेक्ट. चलो ठीक है, ये वाला पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, सही है? Okay, sir. चलिए, ओके देन, टेक केयर. Okay, sir. हाफिज.